यो 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 क्या हो रहा है? Yo, Nitish sir, how are you? Hey Dharmesh, how are you? Yeah, I know it's not 8, but हुआ ये है कि टाइमर गलत लगा दिया था मैंने, तो I'm gonna start early. आज हम जल्दी बात करेंगे. I think Nitish sir, do let me know if the audio is nice. कोई issue तो नहीं आ रहा है audio में. Do let me know if the camera and everything is good. कोई bug तो नहीं है. Audio is clear ना. Do let me know if everything is cool. ठीक है. Yo, how are you sir? हम start. We'll start in few minutes. And करते हैं start. मतलब एक बहुत क्रेजी धुन बनाई है. Like so, you might have seen इस week हमें थोड़ी बकचोदी की थी, ठीक है. So what we did was ठीक है, मेरे को मत सिखा भाई, तू ये जाना. हाँ, so what we did was कि मैं और पेनी पैंडा, I don't know how many of you are aware. Hey, yes sir. What we are gonna create. So Abhi, I'll have one more person on the stream called Akshit. He was my co-founder in Design Friends. Web3 में design करते हैं. He's from Delhi. And I have an idea of what I want to create. ठीक है, मेरे को थोड़ा सा product पता है. No, I haven't done nothing. I wanted to do the sketch and wireframing पहले, but I thought, you know what, let's do on stream. The worst thing is कि थोड़ा time ज़्यादा लग जाएगा, but crazy करते हैं, right? तो वो अभी करेंगे. We'll wait for people to get started. I'll send the link to अक्षय. थोड़ा start करेंगे धीमे धीमे. बाय द वे कॉन्फ़िग देख रहे हो कि नहीं यार? कल क्या ही क्रेजी चीज़ें आई हैं. बहुत ही क्रेजी चीज़ें हैं. आई वाज एक्चुअली मेकिंग अ वीडियो इटसेल्फ, उसके लिए कुछ एक फ़नी स्किट बनाना था. नीतीश सर के ट्वीट से ही आइडिया आया ना. इट्स लाइक, यू नो व्हाट, करते हैं कुछ क्रेजी सा. हे सिड, हाउ यू सर? लास्ट टाइम आप लास्ट वीक नहीं थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? थे, आई डोंट रिमेंबर. बट वेलकम बैक. वेलकम बैक. आज थोड़ा सा प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे. एंड नाउ हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आई एम अफ्रेड बिकॉज नीतीश सर स्ट्रीम देख रहे हैं. सो आई डोंट वांट टू फक अप बिकॉज नीतीश फाइंड्स दैट आई फक्ड अप. पेटीएम में इज्जत चली जाएगी मेरी पेटीएम के अंदर, ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे. बट या व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी, इससे पहले था कि सो यस लास्ट आई मीन व्हाट, जब तक सब लोग आ रहे हैं थोड़ा हमारे लाइक वी आर शायद अर्ली, तो कुछ दिखाता हूँ. बूम, ये सब बंद करते हैं. लेट्स गो टू आर्क. या इसके दिख रही है. सो पेनी पैंडा करके एक बंदा है, who's a developer in Web3, and he works with Truts, a friend of mine called Raj, uska company, and they are making a amazing product. Like it was Glassdoor for professionals, अब पता नहीं क्या pivot हो चुका है, but something like that. ठीक है. So randomly I just had an idea कि let me just find this. Yeah, is the tweet. So okay, randomly I just had an idea, what if I kind of like recorded Rudra's voice, ठीक है, and make a music out of it. And I only knew Penny, so ईशान नाम है भाई का. I only know ईशान क्योंकि वही I know that as a music producer. I was like, इससे करवाते भाई से, मज़ा आएगा, right? So so ईशान sir ने help me out with the whole thing, like, and we found this tool called BandLab जो बहुत fun है. I mean, you know what? First of all, like, I'll hear you the Rudra wala melody, which is not that बहुत crazy नहीं है, but fun. Yeah, so एक मिनट. So this was it. I just recorded his voice. He's right now वो ज़्यादा बोल नहीं पाता. He just says mom and all that, right? So I recorded that, and Ishan helped me make a melody out of it. And believe me, this was like very nice. ये उसका पूरा editing stream है. Like if I show you the studio ना, यहाँ पे you can see क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था. Everything is available here. By the way, we'll start like the product wala thing at 8. ठीक है, direct jump कर देंगे. We won't waste any time on it. So don't worry. We'll wait for a few people to come out. Stream चालू होने वाली थी, थोड़ा जल्दी कर दिया है मैंने, ठीक है. And I can see only 3 people. So Nitish sir, Sid and Dharmesh are only here. But करते हैं, we'll go ahead there. तब तक ये थोड़ी बकचोदी देख लो, ठीक है. So yeah. हाँ, so this is the stream. Like this is the whole
thing. And I found out कि ये easy कैसे जाता पता है. Like what they do is they have a drum machine जो beat दे देता है तुमको, and then you can add custom things and you can do all of that, right? And here you can go to instrument. For example, let's say if I want to change the drum machine, I can just add a beat here. Like this is a वो नहीं क्या बोलते हैं उसको, that like that. So see, this I can do from here. And इसका benefit यही है कि now I can make my own beat. So अभी मैं I'm gonna turn these all other audio mute. The drum machine पे ही I'm playing around and let's see. है ना crazy चीज़ है, like this whole thing is amazing. Hi-hat, yes, hi-hat. The more beats I add, beat कम ज़्यादा हो रही है and all that. The fun part is much stuff to play around with music and crazy stuff. I mean, this is one thing you can do side of stop this weather. And then different alag melody hai, you can play around and all that. So try this tool. This is fun. Yeah, crazy hai. And I also I'm gonna experiment with using my voice to auto tune करने के लिए, but with AI. And let's see how it goes. कितना crazy बनता है. But yeah, this music thing was really fun. So coming now. So hey Ansuman sir, how are you? All good? Coming. So what I did was I asked him कि bro मेरे को stream के लिए I need a audio, ठीक है? And I was like कुछ crazy सा बनाओ sir, like मजा आ जाए, something like that, right? And I gave him some क्या बोलते feedback कि मुझे ऐसा थोड़ा सा Indian चाहिए, थोड़ी Indian vibe चाहिए, all that. And he made this. Listen to this. I don't know कितना लंबा play हो sound effect. Listen to this. ये बीट तो नॉर्मल है, बट ड्रॉप आएगा अभी, इतना बहुत कैसे जाएगा? The flute is crazy. Boom. Thana crazy. Like again, I'm just now excited कि so this was just the basic version which he made, right? And I'm excited कि इसके बाद जो next version लेके आएगा. So I'll tell you the story ना इसमें क्या क्या है. मैंने उसको ये बोला था कि everything else is fine, but I want a mix of two things, ठीक है? And वो two things कौन सी हैं? What I asked him specifically to do was, let me find the beats. So I come from भिंड, राइट? और भिंड में द म्यूजिक लाइक जो फोक सॉन्ग हुए हैं वहाँ के, वो थोड़े से दे गोज इनटू दिस क्या बोलते हैं, हारमोनियम और सब जाते हैं, राइट? तो I'll play the song in थोड़ी देर में. And the benefit of that is कि उसके ऐसे बहुत ही crazy वो लगता है, like एक Indian vibe आती है. So I want that vibe in this.
So I'm asking him to make more variation from me. But ye wala bhi, if you hear to this, no, then listen to this. So this harmonium beat, right? Like this sound is very Indian. Like to me, it's represent where I come from. So now he's trying to implement this with the flute and everything. And थोड़ा obviously we'll experiment a lot with कौन सा vibe set हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है and all that. पर जब बन जाएगा तो क्या ही like having specific stream based music और क्या चाहिए जीवन में, like what else do you need, right? Hey fiction, सर आपका नाम बता दो ना मुझे, like tell me your name because fiction say it's not, so it's not good to call you with that name, which if you prefer, again I'm okay with that, but हाँ cool. जब तक थोड़ा और आई थिंक आई हैव कॉल्ड अक्षित, वो आ रहा है, आई होप आ रहा है, ये व्हाट्सएप पर लिंक भेज दिया है, डबल क्लिक हो चुका है, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन, वो आता से स्टार्ट करते हैं, बट तब तक के लिए लेट्स जस्ट गो इनटू फिग्मा एंड थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं. I'm gonna stop WhatsApp, तुम लोग को मेरी चैट नहीं दिखानी. We'll go to screen sharing and voila, let's go to Figma. So Figma में already was playing around with क्या बोलते हैं fonts and everything, तो वो फन लग रहा था मेरे को ऑलरेडी. Let me just increase the brightness to full ताकि मेरे यहाँ पे दिखे बढ़िया से. अतुल सर क्या एफर्ट ले रहे हैं, मेरी स्ट्रीम पे व्यूज़ आए इसके लिए भाई 2 अलग अलग अकाउंट से आ रहे हैं कि भाई व्यूज़ कम नहीं होने चाहिए. ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं डेडिकेशन. दिस इज डेडिकेशन कि दो व्यूज एक्स्ट्रा के लिए भाई 2 अकाउंट से लॉग इन कर रखे हैं. सो कमिंग लाइक वी गो टू फिग्मा एंड एवरीथिंग. तब तक यू नो व्हाट, लेट मी प्ले दिस साउंड. जस्ट कैन आई डिक्रीज द म्यूजिक कम एंड रिपीट पे. साउंड पीछे आज ज़्यादा आ रहा है, कैसा आ रहा है? लाइक कैन यू हियर द साउंड? लाइक द बीट पीछे बजती रहेगी. आई डोंट नो ऑडियो में कितना, यू नो व्हाट, लेट्स क्लोज इट, फालतू में स्ट्रेस नहीं लेते हैं. बट ये कि अब जब भी स्ट्रीम में स्टार्ट करूँगा तो अभी तक के लिए तो यही म्यूजिक यूज़ करूँगा जब तक वी गेट द बेटर म्यूजिक. बट हाँ, तब के लिए यही यूज़ करेंगे. लेट्स गो टू द होम. मतलब दिस इज़ माई फोल्डर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स जो थोड़े बहुत यहाँ वहाँ रैंडम बने हुए हैं, सब चीज़ों का मिक्स इसी फिग्मा फायर में. बाय द वे फिग्मा फायर में ये बहुत क्रेजी हो गया है. लाइक आई लव दिस होल क्लीन यूआई. दे सेड के कल उन्होंने बहुत क्लीन कर दिया, बट अब बहुत ज़्यादा ही सेक्सी, लाइक इट लुक्स सो गुड, लाइक एकदम मिनिमल. एक लाइन्स वाइन्स डिवाइडर सब चले गए हैं. कूल राइट, कूल शिट. सो आई एम नॉट श्योर अक्षित कहाँ रह गया भाई. लेट मी ट्राई टू गेट हिम ऑन, नहीं तो फिर अपने स्टार्ट कर ही देंगे. ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बट इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं. कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गया? बाय द वे गुड न्यूज़, इंस्टाग्राम पे वन ऑफ माई रील वेंट टू 10K, विच वैसे अगेन इतनी भी गुड न्यूज़ वाली बात नहीं है, बट भाई के लिए तो है. देख रहे हो ये या दिस वन, दिस फिग्मा एप्पल वाली रील, दिस वेंट टू अराउंड 10.3K. सो बढ़िया एकदम. मयंक साइनी इज लाइक सर्च बार कहाँ है? हाँ यार, फक, ट्रू. आई थिंक कंट्रोल F वर्क्स, नो कमांड F नहीं, कमांड P. अच्छा ये रहा इधर 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 कॉर्नर में है एकदम. एंड और यू जस्ट यूज कमांड एंड स्लैश, you can use that as a shortcut also. Yeah, just search for whatever you want to search, सब मिल जाएगा यहाँ पे. बट क्लीन हो गया, लुक तो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी क्लीन हो गया, सो दैट आई लव. अभी आते हैं, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट. बिफोर वी जंप, लाइक यू नो व्हाट, लेट्स स्टार्ट बिगिंग द प्रोडक्ट. आई एम नॉट श्योर अक्षित कहाँ रह गए. लेट मी फाइंड आउट. एक तो वो जिम फ्रीक है, तो जिम में हो सकता है, पॉसिबल है, राइट, पॉसिबल ही माइट बी देयर, राइट. सो वो देखते रहेंगे. बढ़िया. कमिंग टू दिस, कहाँ गया?
मतलब ये एक प्रोडक्ट बहुत सेक्सी बनाया मैंने अभी. अब लाइक आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस, टेकिंग हेल्प ऑफ फ्यू फोक्स, राइट. तो तुम लोग अब आ ही गए हो, थोड़ा फीडबैक दे ही जाओ प्रोडक्ट में. सो डे वॉज प्रोडक्ट का थोड़ा स्ट्रीम था. आई एम अज्यूमिंग देयर वुड बी सो मोर प्रोडक्ट फोक्स, राइट. बाय द वे एक सेकंड रुकना, मुझे ट्विटर पे भी इसका क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूँ यार, कोई मिस कर जाए. वैसे तो सब लोग यहीं पे हैं, बट जस्ट टू बी सेफ, मोर पीपल डजंट लाइक, मोर द मेरियर. समझ रहे हो वाइब, समझ रहे हो? लेट मी जस्ट पुट दिस इन इंस्टाग्राम स्टोरी. एक सेकंड, click a picture and we are live. And I'm gonna add a link. The Instagram with this link feature is nice, but I just wanted to have something like a thumbnail on top of it. Generally now what I do is I just add an image as a screenshot, but if it just take the OG image, why not? If you're like giving me the options to add a link which will be clickable, why not give me an option to show the OG image also, so it at least makes more sense, right? I don't have to go customize and design it like this. But yeah, so stories are gone. लो, अक्षय सर ने दे दिया है धोखा मुझे, सो ही इज़ नॉट गोना बी हियर. दैट मीन्स वील जस्ट जंप ऑन राइट ऑफ. तो इसको करते हैं बंद. विल जस्ट गो हियर एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफ, क्या आइडिया है क्या नहीं है एंड ऑल दैट, राइट. विल जस्ट डायरेक्टली गो इनटू दिस एंड लेट्स जंप. सो ठीक है, सो द प्रोडक्ट आइडिया इज वेरी सिंपल. तुम लोगों ने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि एक प्रोडक्ट बहुत वर्क कर रहा है, लाइक आग मचा रहा था पूरे डिज़ाइन ट्विटर पे, और एटलीस्ट वेब थ्री ट्विटर पे तो बहुत मचा चुका था. डिज़ाइन आई एम नॉट श्योर, बट वेब थ्री ट्विटर पे बहुत है. सनी सर क्या फाइनल डिज़ाइन, अभी से स्ट्रेस मत दो यार. कहाँ अच्छी बने ना बने क्या मालूम, काम करते ना, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. बाय द वे दिस इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा डर वाली बात है जब भी स्टार्टिंग स्टेज पे व्हेन आई हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, राइट. एंड रिजल्ट पे व्हेन पीपल हैव एक्सपेक्टेशन लाइक यार अभी स्टार्ट तो करने दो, सो दैट नेवर जंप ऑन द लास्ट स्टेज लाइक हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर आगे देख लेंगे, राइट. धर्मेश सर को शार्ट आउट दे दूँ मैं. Yeah, so this, but Dharmesh is one of my friend who lives in Ahmedabad only, इसलिए बकचोदी कर रहा है इतनी भाई. 4 बजे परेशान करने में लगा भाई, बट भाई है. Coming back to कहाँ गया ये screenshot, but I'll show you and you'll get the idea. Yes, this one. So take a look at this. Wrong one. This one. Yeah. So जो ये वाला एक आइडिया है, so this is done by Contranet, ठीक है, कंट्रोल नेट करके, सॉरी कंट्रोल नेट से हो रहा है. एंड द थिंग इज दैट यू अपलोड, यू गो टू, कहाँ गया भाई, अरे हाँ ये लिंक. या सो गिटहब में ये कोड है, राइट. उसके ऊपर एक ये यूआई बना हुआ है हगिंग फेस पे, एंड इस पे यू गो एंड यू डू स्टफ, लाइक यू गो एंड यू वर्क ऑन दिस, और तुम इस पे कर सकते हो. जनरली आई विल शो यू व्हाट दिस प्रोडक्ट डज, सो यू हैव एन आइडिया व्हाट वी आर बिल्डिंग, राइट. सो डाउनलोड्स में जाके इफ आई अपलोड इमेज लाइक दिस सुपर टीम वाला लोगो, और इवन इफ आई अपलोड द IKEA वाला लोगो, राइट, लेट्स से आई अपलोड दिस, ठीक है, एंड आई ऐड अ प्रॉम्प्ट व्हिच इज एरियल. आई वांट अ एरियल शॉट and I want a jungle or a ocean, right, and just run it, let it run. So what this will do is, yeah, this happens when people, like too many people are trying this happens. Let me try 3-4 variation and see if this works or not. See, it's not working. कोई बात नहीं, I'll show you the result. I have done that too. जो मेरे मीडिया फाइल में मिल जाएगी. आई डिड दिस फॉर सुपर टीम, ठीक है. सुपर टीम का मैंने लोगो लिया, उसको अपलोड किया, एंड देन आई कुड हियर यूज दैट लोगो एज अ शेप इनसाइड लाइक द स्क्रीन्स. इसका बेनिफिट होता है, कैसे होता है, जनरली नाइकीज और अडोबी में व्हेन एवर दे क्रिएट, लाइक दे यूज एलिमेंट्स टू क्रिएट दिस लोगो. इसका बेनिफिट ये है कि इट इज़ हेल्पफुल, लाइक मार्केटिंग पोस्टर में कर सकते हो, यू कैन ऐड दीज GIFs और वीडियोस एंड एवरीथिंग. बहुत सारे यूज केसेस हैं इस चीज़ के. लाइक फॉर एग्जांपल सुपर टीम में द स्पेसिफिक यूज केस, लाइक अगेन आई वाज नॉट वेरी गुड विद प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, तो उतना क्रेजी प्रॉम्प्ट नहीं दिखा है, बट सुपर टीम में स्पेसिफिक जो यूज केस था इसका, वो
which I was seeing was कि super team अलग अलग city में, right? So it's in India, it's in Turkey, it's in London, हर जगह अलग अलग है, right? So what if I add like different cities का क्या बोलते हैं UI इसके अंदर, like background, and keep the same super team logo, and it shows कि it's in multiple cities directly, right? तो ये benefit था इस चीज़ का, इस logo को use करने का. Now the product we're going to design today is like, so I wanted to make this with a friend, मेरा एक दोस्त जो AI पे काम करता है, who can easily make this backend पूरा. So he just needs front end, right? तो वो हम बनाएंगे stream पे. And the idea is very simple. We have this screen already. ये control में already ये चीज़ बन रखी है. Like this is the UI, existing UI. So इसमें at least हमें पूरा assumption नहीं करना है, right? And we'll hide this thing. So what we want to do is this technical UI, we want to make it very user friendly. This is going to be a B2C product, like people will use this product, ठीक है? So we want कि यार लोगों को ये product तकलीफ ना दे, and they can easily work on this, right? So by the way, मैं इसको laptop में use कर रहा हूँ, that's why my screen is so small, so that tension ना लेना भाई you. ऐसे कम होगा भी नहीं, हाँ. So this is the already we have a basic starting point, right? अब these kind of ideas work as side projects. Like मुझे अगर आपका अपनी UI design skill या product design skill दिखानी है, so I can build this simpler like a small side project. And what I'll do is I will go detail पे थोड़ा सा इसको लिखेंगे, चीज़ें figure out करेंगे, right? What we need, what we don't need and all that. But तुम इसको लेके कर सकते हो. So this is the basic idea. We're gonna recreate or we're gonna make a product which will let you do this, but in much better way, right? With much better experience. And obviously when the developer will work on this, he'll be make sure that the prompt and everything is much better, so you will also get a much better result. क्योंकि इसमें तो you expect like this is a B2B product, right? So you are like bro, हाँ इसमें तो मज़ा नहीं आया, चीज़ें अच्छी नहीं हुई and all that, right? And you can just say कि हाँ यार ये तो hang हो गया, error आ गई, which is fine when you're working with these kind of UI जो tech पे है, you can be okay with that, you can do that. But जब तुम इस पे काम कर रहे हो, for example B2C वाले प्राइड, when you're charging people, you can't do that. You can't say कि हाँ ये work नहीं किया. So you have to find a way. So वो सब technical वाला बंदा backend में figure out करेगा. What we'll do is we'll make a UI for this and hopefully make a responsive UI, और इसको हम दे देंगे to the developer and he'll develop it. And we'll have a app or product for us. Simple idea, ठीक है? इतना complication कुछ नहीं है. Very simple idea. What I'm gonna do is I'm gonna get started on the feature side. So generally when we go into full-fledged product, वहाँ पूरा style अलग होता है. But इस वाले में what we'll do is we'll go step by step, right? So for side project, as we already have a good UI base, right? So now we need to design a landing page for this, ठीक है? A logo for this, and then obviously the product का जो UI है उससे लोग interact करेंगे. Now generally in side project, small side project, what you do is you don't have multiple screens. For example, landing page can be my can be my UI page only. Like it can be the same thing, right? I don't need to create two different screens. मैं same बना दूंगा और वो हो जाएगा, right? And that can be one way. But अभी अगर मैं branding में घुस गया ना, if I start making a logo and everything on it, it will just waste too much time. तो अभी उसमें नहीं घुसेंगे. What we'll do is we'll just clean up this UI. फिर then slowly we'll go to the step by step. Simple से funded, ठीक है? And obviously in that doing that process, auto layout, variables and all that we'll check. Hey Akshit, how are you? Sir, आप आ गए हो? Free हो तो आना बताना. Hey Sumit, thank you sir, thank you so much. आपका काम भी दिखा, we'll also get inspired. हाँ, so coming back to this, ठीक है? तो अब this is the UI. What's the next step? The next step for me would be, how the hell do I hide? Oh, this is hide. Yeah. So the next step for me would be before thinking a landing page साथ में बनेगा नहीं बनेगा सब छोड़ते हैं, बस अभी हम basic wireframing करेंगे, right? So उसके लिए हमें दो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, इनपुट और आउटपुट्स. Like I want to make sure कि इनपुट कितने आने वाले हैं, like यूज़र कितना इसमें इनपुट यूज़ करने वाला, कितना इसमें इंटरेक्ट करेगा और कितना हमें उसको आउटपुट अलग अलग चीज़ों का देना है, right? So if I go into this screen and look into it, by the way you all can also suggest, हाँ कुछ भी हो तो do comment, that would be very amazing. So what we need to do is we need to give, like I'm gonna keep writing this also here ताकि थोड़ा सा मुझे भी याद रहे, and we'll be, so obviously image upload आएगा यहाँ पे,
So yeah, cause logo upload करवाना पड़ेगा, right? So I'm gonna write it logo upload, which will ask people. So ये input में आ जाएगा. I'm gonna make here a new folder, call it inputs and bold. And इसमें मुझे उनसे सिर्फ logo upload चाहिए. And do I want prompts? Like yeah, I want them to add custom prompts, right? तो custom prompt add कर सकते हैं, but because of the prompts, what I want is I also want pre-designed prompts, like वो लिखे हुए हो, and then I just choose and pre-written prompts. Because होगा क्या हर बार, like if I can show you कि इस prompt को लिखने से you get something like this result, right? And you can use that. So बढ़िया ही है, right? Again, we assume that user, yeah, like the less time it takes the user from going first to end, like पूरी journey करने में easy time लगेगा, तो क्यों नहीं? And we want them to just खत्म करके निकलते आगे, right? Hey Krish, how are you? हाँ, so jumping back, ठीक है. तो अब इस चीज़ में like I need two inputs, एक logo upload, एक prompts. And do we need anything else? नहीं, बाकी सब उन्हें जानने का मतलब नहीं है. They don't need to know कि ये क्या बोलते हैं इसके अंदर what is the advanced option of ये वो number images. This can be added in the next phase. ये थोड़ा ज़्यादा complicated करना होगा. But we'll give them the basic nice variation, हमको दे देंगे, right? उससे ज़्यादा उन्हें issue आएगा भी नहीं. Right now this is the input हो गए. अब बात करते हैं output की. तो output क्या होगा? Now in this one when you run, you only get one image, right? But again, as I said, as a user, मैं हर बार थोड़ी रीरन करने जाऊँगा prompt. इसमें मुझे ये पेन था कि मुझे 6 बार रीरन करना पड़ा. And when there was not a good image, I have to again rerun the same prompt regenerate करना पड़ रहा था. But in that, I like Photoshop का UI. So Photoshop में Photoshop beta में you know what, I can show you Photoshop beta also. Whenever I generate any image, right? So like example, let's say I want to change, I want to have a cap on my head, right? और यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा cap और baseball cap much better. ठीक है. When I generate, this will generate थोड़ा time लेगा. We'll come back to this. So I'm gonna make outputs का folder also. Yeah. Result images. And yeah, images आ जाएंगे. We don't want one image, we want multiple images. That's very important. I'll show you why. So ये जैसे कैप आ गई. अब यही मुझे वापस करना, then I have to click again generate. तो सेंस नहीं बन रहा है. तो एक बार generate कर रहे हो, why don't generate 2-3 variation, right? So what Photoshop does is it gives me 2-3 options, right? So 1, 2, 3. This is a much nicer way if I want to do this, right? पहले मैं जरा ये टोपी हटा दूँ, तिरछी टोपी वाले. But you know what, I like this idea. Let me try putting a cap, hip hop cap. Yeah, it's generated. तो वापस आता है. Yeah, coming back. So I want to generate not only one but multiple images, right? एक नहीं दिखाने मुझे. I want to give them options, and then okay, obviously they can refresh and everything. ये input और outputs हो गए, right? ये जो है ये चीज़ उसके ऊपर आने वाली है. So what we'll do is we'll just design a basic wireframe अभी, ठीक है? And that's the easiest way. Generally, there are people like, for example, I think I know Akshita करते हैं. He likes to use pre-designed kits, and few of my friends also. मैं थोड़ा traditional उस चीज़ में. I like to go in detail. I want to use my time here as much as possible. और अपना time लेके फिर I like to go slowly into this shit. Like बिल्कुल jump नहीं करना है उसके अंदर तुरंत ही कि हाँ कुछ crazy सा बस kit उठा के use कर लिया. Let's go slowly, right? So ये हो गया. So we know inputs, we know outputs. We'll need the labels and everything. वो हम जब कर रहेंगे तभी figure out कर लेंगे. Because when we'll make inputs, we'll figure that part out. Now, cause इतने कम inputs और outputs हैं, right? That means अगर चलो let's just start wireframing. उसके बाद बाकी चीज़ें कर सकते हैं. Let me check Photoshop में और क्या हो रहा है. Oh, bar वाला check नहीं किया मैंने sir. I haven't used bar that much. Not very good caps, but yeah, we'll check bar. Nidesh sir ने idea दिया है तो we'll definitely do. Coming back to this, yes. So let's just start wireframing. I use a MacBook Pro 1400 by 40 by 900 का thing. Simple layout grid. I keep it one like column में 12 का count, margin 120 की and 20 की gutter. Yep, this is the base I have. The reason I do is because MacBook Pro में मैं design करता हूँ. Like the screen में I can see the preview of it, right? और अब in what now I can even see inline ना.
Yeah, I can even see inline, right? Slowly, slowly. So you're going to wrong people. ठीक है, you need some speed there sometimes. हाँ, so coming back, so यहाँ पर जैसा design, cause I also developed these, like the way I learned layout and everything was from Webflow पे जब design करता था मैं, develop करता था तब, right? So वहाँ it's easier because I know कि मेरे को develop बनाना है, उसको 120 की margin देनी है both side ताकि space रहे, and then responsive मैं कर देता था उसको, right? So ये हो गया अपना basic variation. And being a lazy designer, one of the biggest trick is कि अगर तुम्हें चीज़ जल्दी भरनी है और जल्दी स्क्रीन को भरा हुआ दिखाना है, what you need to do is go from light mode to dark mode. Ooh, see, Figma did this thing. I don't know if you can see, but what they did was they made this. ये अच्छे आइकॉन ऐड कर दिए हैं. अब लिस्ट नहीं है यहाँ पे. You don't need to use list. You can just use icons. Nice, small details, right? Much easier to use. I didn't notice it, but amazing. ठीक है. So you just make it black. Always black always works. Right. So ये हो गया. And now I need to obviously have a nav bar. Any product you make, you have a nav bar. Basic wireframing startup, right? So what we'll do is, well, let's say I have a logo here, and I'm gonna make this logo white. White to face. Just gonna add a auto layout, wrapping and all that. App object, next line object, next. Minimum and maximum width, nice. So generally minimum and maximum width I used to use in Webflow. बहुत मजा आता था. But yeah, logo में अभी तो I'm gonna keep this padding. I don't need any other logo वाला thing. But what I'll do is I also need, let's assume कि ये logo मैं center में मैं लगा दे रहा हूँ. अभी के पास कम stuff है, so I don't want to assume कि info आएगा, ये आएगा, login logout आएगा, सब छोड़ते हैं. अभी basic wireframe करते हैं. That means we'll make this fill the screen. And that यार फिग्मा में ये नहीं होता ना, दैट्स लाइक ऑब्वियसली आई जस्ट हैव टू पुट, क्योंकि ये फ्रेम को कंटेनर नहीं यूज़ करता है. इन वेबफ्लो दैट हैपन्स, so वो मेरे बेनिफिट होता था बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू डिज़ाइन, द कन्फ्यूजन वाज फिग्मा में आई एम नॉट डिज़ाइनिंग ऑटो लेआउट वेरी अलग, एंड वेबफ्लो में आई एम डिज़ाइनिंग वेरी अलग, तो बहुत ही पेन होता था उसके अंदर. बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़. वी हैव दिस लोगो, एंड टू शो कि ये लोगो है आई ऑल्सो नीड गुड मार्जिन, राइट? सो इसकी हाइट जो है 44 की है. चलिए व्हाट आई डू इज़ व्हेन आई ऐड मार्जिन, आई जस्ट ऐड 20 का मार्जिन. थोड़ा बड़ा नेव बार अच्छा लगता है. विल ऐड अ बेसिक फिल ताकि वो एकदम ही डिस्टिंग्विश दिख जाए, राइट? या सो दिस इज द बेसिक्स. अब ये बन गया. आई हैव दिस बेसिक लेआउट एंड ऑल दैट. नाउ इनपुट और आउटपुट, राइट? सो इनपुट के लिए आई नीड अ लोगो अपलोड का इमेज एंड अ प्रॉम्प्ट एंटरिंग थिंग, एंड देन आई नीड अ फ़ॉन्ट चेंज कर लो. क्या हो गया सर? अच्छे फ़ॉन्ट तो हैं. फिग्मा हैंड, फिग्मा कस्टम फ़ॉन्ट, नाइस. आई मीन आई कैन यूज़ केवियर ऑल्सो, caveat also, but yeah, these are also nice. I'll keep this one also. थोड़ा पेन से हेलो सर मयंक सर. हाँ, coming coming to this back, like अब coming back to this, so obviously I know that I need to upload an image and all that. तो उसका एक बैनर बनेगा. let's make इस random 4 by इसमें बना देते हैं इसको. अगेन वी आर नॉट डूइंग द परफेक्टली, तो ये चल जाएगा. वायर फ्रेमिंग में डोंट हैव टू स्ट्रेस दैट मच. ये आ गया. देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद you want to add upload button. Generally when you click image, it normally uploads, right? But the thing is, यहाँ पे मुझे एक बटन देनी पड़ेगी which is run वाला option, like start, right? And instead of calling it run, I'll make it something more human. So I'll make it generate. Like इतना human नहीं है, but I know कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, which is to generate mockups, right? So I'll generate mockups. I can write that down. And 16 के font होंगे, मैं गलत नहीं होता. हाँ, 16 के font हैं, some good वो. And I'll make a button here थोड़ा सा just slightly arrange करके. Again same here also, this also gets another color. अब random color select कर रहा हूँ, I know, don't get triggered style guide वाले लोग, but yeah. So I upload an image here, ये image upload होगी, then I generate mockups. Now the mockups needs to be seen somewhere. बाकी इसमें prompt का option नहीं आया ना. Yes, I need to add a prompt. Now I have to make decision, like I'm gonna add a prompt का also box. Let's just make, you can't hear but Rudra is shouting out of the gate. चिल्ला पता नहीं क्यों. Yeah, so add prompt का एक वो बनेगा. I'm gonna make gonna keep it on the corner only. Random अभी ले लेता हूँ मैं इसको. Same goes color based में भी थोड़ा सा इसमें color, इसमें outline देते हैं. Text based है तो
एक सेकंड है ममो यार, ये घर पे रहने का ये फ़ायदा है, यू गेट सॉरी फूड बन गया था या सो प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन आई नीड अ आउटपुट वाला बॉक्स विच विल बी अगेन इमेजेस बट आई वांट अ गैलरी ऑफ थिंग्स सो द trick is I can either add arrows on both side, right? Either I can add arrows on both side so people know कि अच्छा ये अलग अलग यहाँ पे दो images अलग अलग हैं, right? So I'm gonna make them white, put them one here. जनरली यू डोंट सी वायरफ्रेमिंग वाला स्टेज विद मल्टीपल पीपल क्योंकि यार अब मैं भी काम कर रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन में तुम्हें डायरेक्ट मेन चीज़ दिखाऊंगा फिनिश प्रोडक्ट या प्रोसेस में भी आई विल शो द ब्यूटीफुल पार्ट, ये नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बोरिंग है ये, राइट? बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट क्लैरिटी ऑफ माइंड. तो ये हो गया, दिस इज़ वन वे वेर आई जस्ट हैव अ लेफ्ट राइट लेआउट. यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट ऐड किया, यहाँ पे सब ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट के बाद ये अलग है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है इसका, ये जनरेट मॉकअप हो गया बटन, यहाँ से लेफ्ट में मैंने ये चीज़ें ऐड की और राइट में ऑटोमेटिक ये जनरेट हो गया. नाउ वन थिंग लाइक यू विल नोटिस जो मैंने बिना बोले मैं कर रहा हूँ, जिसके एरो ऐड करने के बाद आई वुड बाय माई सेल्फ जस्ट ऐड 3 डॉट्स हियर है 4 डॉट्स हियर, पीपल नो कितने ऑप्शन ऑफ इमेजेस अवेलेबल है. यार पता तो चलना चाहिए ना कि 3 इमेज दे रहे हो, 4 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, लाइक टिल व्हेन शुड आई क्लिक नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. इफ़ यू डोंट गिव मी एनी इंडिकेटर तो मैं पता कब तक करता हूँ, जब तक मुझे पहली इमेज ना दिखे एंड देन आई हैव टू रिमेंबर कि पहली इमेज क्या थी. आई एम सीइंग फॉर फर्स्ट टाइम सो मेरे को नहीं पता होगा ना पहली इमेज क्या थी, सो वो पेन अलग से हो जाता है. एंड बाय द वे यू ऑल आर हियर ना, मैं चेंज दिस कमेंट्स देख लेता हूँ एक बार मैं, या नहीं पे हो कि नहीं हो. आई कैन से लाइक देयर आर नो कमेंट्स, आई एम नॉट श्योर, लेटेस्ट कमेंट कुछ आई नहीं है बट कूल विल कीप डूइंग दिस, करते रहेंगे कुछ ना कुछ. हाँ, सो दिस विल टेल द यूज़र कि अच्छा 3 इमेजेस हैं, राइट नाउ आई एम ऑन द फर्स्ट वन और बाकी 2 आगे हैं विच आई कैन चेक. Now this is one variation of like this is one way of doing it. I'm gonna auto layout this shit, center line with this, and yeah, this is one way of doing it. The second way of doing this same modal, like say the same element is, क्योंकि again I have seen tons of gallery वाला elements ना, तो I know कि कौन सा कैसे लगता है. This is one way. The second thing, hi yes यहीं पे ना बढ़िया. The second way is what if I just add small preview of all 3 images. Right, so instead of having pura like arrows, I just have 3 images like this, and I add, instead of arrows adding there, I add the arrows here. So you can all not only interact while clicking the images, you can click on images and do that, and you can also do it with arrow, right? और obviously the thing is अगर तुम इस पे होगे तो ये स्क्रीन जो होगी वो डल हो जाएगी ऐसे, मोड्स अलग अलग, एक्टिव मोड अलग हो जाएंगे, not that, right? Now these are two different things, but इसमें while doing this I forgot one thing, क्या आउटपुट दे दिया, इनपुट दे दिया, बट एक्शन क्या है, लाइक ये हो तो गया, अब क्या? टू एक्सपेक्ट देम टू कॉपी दिस एन इमेज एंड पेस्ट इनटू अ न्यू, वो नहीं करना ना, वी वांट देम टू डाउनलोड इमेजेस, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे एक और बटन चाहिए होगा विच वुड बी डाउनलोड इमेजेस. He said crazy thing bro, join 10k मजा आ जाएगा, download images. And now I don't want my user to just download one images, I want them to download all of them because सब अच्छी हैं, उसको पसंद नहीं आएंगी तो वो कर लेगा and कर लेगी that they can do. तो ये हो गया बेसिक 2 चीज़ें, राइट? सो डाउनलोड इमेजेस का ऑप्शन आ गया, जनरेट मॉकअप लेफ्ट टू राइट, वंस यू क्लिक ऑन इट ये चला जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा. एंड ऑब्वियसली सो दिस हैव मल्टीपल स्टेट जनरेट मॉकअप्स वाला विच विल बी, एक जनरेट मॉकअप होगा देन अदर वन विल रीजनरेट, राइट? सो एक बार वो जनरेट कर गया उसके बाद रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा, लेट्स से अगर मुझे मज़ा नहीं आया, हाउ डू आई रीजनरेट, राइट? तो यहाँ पे दिस बटन विल चेंज. तो वायर फ्रेमिंग में आई वुड जस्ट क्रिएट अ component out of it, add a property, a variant which would be regenerate. Now I can do is regenerate mockups, or I can just show me more options, something like that. Copy पे will go detail जब final करेंगे तब देख सकते हैं, but show me more option and I'll make this, I'll name this variant more option, or if I have to name it right I'll name it regenerate.
राइट. एंड प्रोटोटाइपिंग में ऑब्वियसली आई मेक श्योर कि जब एक बार यहाँ क्लिक हो जाए उसके बाद ये बटन चेंज हो जाए, इट बिकम्स दिस कंपोनेंट. और लाइक वायरफ्रेमिंग आई डोंट नीड टू डू दिस, मैं व्हेन आई कैन डू दिस व्हेन आई एम डूइंग फाइनली, बट वायरफ्रेमिंग बना ही रहे हैं तो एटलीस्ट हैव सम आइडिया, तो यू विल गेट कि कहाँ कैसे वर्क करता है, राइट. नाउ द थिंग इज विद दिस लोगो, लाइक दिस इनपुट बॉक्स हियर ना, मैंने साइज नहीं बड़ी रखी है, बट डू यू वांट दिस बिग ऑफ अ साइज फॉर दिस इनपुट बॉक्स? हो सकता है कि मैं सिर्फ छोटी सी इमेज ऐसे रख दूँ हल्की सी, तो लाइक इतना तो वर्क कर सकता है. ऑब्वियसली व्हेन आई सेलेक्ट द लोगो देन दिस नीड्स टू बी विजिबल. तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, लाइक इफ आई हैव दिस बिफोर लाइक दिस, ठीक है, और फिर मैंने इमेज अपलोड की, फिर ये रिसर्च हो कितना बड़ा हो रहा है, आई रेदर कीप इट दिस, थोड़ा ब्लैंक कर दूंगा मैं, विच मीन्स आई लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द लेआउट ग्रिड. बहुत गंदा लग रहा है बट यू सी वायर फ्रेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है. लाइक दिस इज हाउ यू गेट आइडिया, राइट. सो योर मेन लोगो, यू गो हियर, यू ऐड अ प्रॉम्प्ट, जनरेट द मॉकअप्स, वो यहाँ पे चले आएंगे मॉकअप्स, यू डोंट डाउनलोड इट, राइट. इफ यू डोंट लाइक देम यू रीजनरेट एंड ऑल दैट. इसमें जिस मैंने प्री रिटन जो प्रॉम्प्ट्स ना वो नहीं दिखाए कहीं पे, right. So what I want to do is, instead of like this, so that flow is different. ये basic UI हो गया कि हाँ बस यहाँ प्रोडक्ट पे आया, मैंने लोगो अपलोड किया, इमेज यहाँ पे जनरली यू हैव अ ये वाला एक इमेज होगा तुम्हारे पास, एक आइकॉन होगा, दिस वन विच जस्ट शोज कि यहाँ ये इमेज अपलोड है, आइकॉन यू कैन ऐड, एंड वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे करते हैं, ठीक है. ये हो गया, एंड देन यू जनरेट मॉकअप्स, डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आ गया. आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, कुछ मिसिंग तो नहीं रह रहा है. लेट मी री लुक एट दिस. वी हैव द इनपुट्स, वी हैव द आउटपुट्स, वी हैव एन एक्शन विच इज जनरेट मॉकअप्स, वी हैव अ डाउनलोड इमेजेस आल्सो. सो या डन. So this is a single frame, like single UI, like single screen wireframe, right? तो ये इसी स्क्रीन पे खत्म हो जाएगा, एक्शन वट एवर आई वॉन्ट टू डू यहीं पे हो जाएगा. नाउ ये प्रोडक्ट का UI हो गया, करेक्ट. नाउ जब मैं लैंडिंग पेज मुझे बनाना है इसका, राइट, सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड मेक अ लैंडिंग पेज. उसका भी वायरफ्रेमिंग कर ही लेते हैं, क्यों नहीं. सो उसमें यू नीड अ लोगो, यूल हैव कनेक्ट एंड ऑल दैट. कमांड डी कहाँ गया भाई ये? अच्छा मैंने इसी को एक्सपेंड कर दिया था क्या? शिफ्ट दोनों, दे नीड्स टू बी फिक्स्ड विथ, दिस नीड्स टू बी फिल कंटेनर, you need also need to be fill container. Instead of doing this, you both go here and just use this side. Yep. So logo, then you have contact, generally which we keep there. Then we'll also have download हो गया, फिर start, we need some CTA ना, तो start डाल देता हूँ मैं अभी, we'll figure out. So ये start और contact साथ में आएगा, logo अलग जाएगा. So that means we'll keep this shift A, इसकी height हम fix कर देंगे, और you know what, let's just make it hug containers. इन दोनों को हम hug containers कर देंगे. Just give them a bit of space. ये बहुत ज़्यादा ही कम space है. Let me just go from here to. So this is what I saying webflow वाला thing ना. So मैंने मार्जिन दिया 120 की, राइट, दोनों साइड पे. So इसकी भी मैं मार्जिन जो पूरा ऑटो लेआउट उसको दे दूंगा 120 का. So now this is much nicer. और ये ट्रिक मैंने सीखी थी, like the guy who taught me is in comments, Keshav. He taught me this cause webflow में जब मैं बना रहा हूँ ना, तो अब तो obviously we have better dev mode and you can see much nicer stuff and all that. But पहले you wanted as less friction as possible, right? So everything, even in auto layout I was doing, I want to make sure कि मैं webflow में से कॉपी कर सकूँ, which I could now do. कि हाँ 120 का मार्जिन याद है, webflow में जाऊँगा, डेवलप बनाऊँगा, फिक्स हाइट दे दूँगा वो 1200 की और 1440 की, और 120 का मार्जिन दे दूँगा, right? So that way that's also easier for me to recreate when I'm doing in webflow में कर रहा हूँ. तो I'm gonna give it some padding on the side, दोनों तरफ. मैं पानी पी लेता हूँ. Yeah. हाँ, तो बैटिंग इतना फ़र्क पड़ा नहीं. Let's increase it to some more. Yeah, some more. Nice. This looks much cleaner. चलिए ये 16 के फॉन्ट ही होंगे. हाँ 16 के फॉन्ट ही है. I keep it in 8 cause मेरे को इजी लगता है वो. Different for every one person. like सब अपने अलग लगते हैं. I like 16. ये हो गया. Then obviously logo वाला जो है इसको भी I'm gonna make it hug contents. अब cause I have made this auto layout, ये अलग auto layout है, so I'll what the fuck it's called, but मैं इनको divide कर दूंगा ऐसे. So I'll just add a and auto spacing हो जाएगी automatically. See, nice. I'll remove the fill from all of them.
कचकरारी है, हाँ, and I'll just give a collective एक पूरा वो दे देंगे इसको, यप, ये हो गया. So this thing at least लैंडिंग पेज के लिए क्लियर हो गया. लैंडिंग पेज में you need a hero section and everything. Now what I'm gonna think is कि अगर मैं इसको लैंडिंग पेज के अंदर बना रहा हूँ, राइट, तो मेरा जो यूआई का स्टाइल है कैसे चेंज होगा. लाइक डू आई नीड टू क्रिएट द प्रोडक्ट अलग एंटर कराने के बाद ऐप में रखूँ तो ये यूआई वर्क कर जाएगा, बिकॉज यहीं पे हो रहा है, तो क्लिक होने का नया पेज आएगा तो ये यूआई सही है. बट अगर इसको मैं लैंडिंग पेज के अंदर ही रख दूँ, राइट, विच इज जस्ट लाइक आई क्रिएट, लेट्स से आई जस्ट हैव अ हीरो इमेज, लेट मी जनरेट, बाय द वे आई कैन यूज एआई टू लाइक चैटजीपीटी से आई कैन जनरेट कॉपी, बट अभी नहीं करते हैं वो क्योंकि बट बहुत टाइम चला जाएगा. लेट मी go back and just copy lorem ipsum, ठीक है. Sunny has a question, उस पर आते हैं सर. देखो लॉरेम में स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, देख रहे हो खाली, अच्छा बड़ा आलस. Yep, so I'm just gonna use 2 line. So again in Hero I'm not like in wireframing stage I'm not thinking कितना crazy क्या UI everything होगा. My basic thing is to get clarity क्या कितना कैसे कहाँ पे आएगा, right. So I'm gonna make it 56, बहुत ज़्यादा हो गया, 42 कर देते हैं. And yeah, so ये हीरो सेक्शन मेरा इतना यहाँ पे आ जा रहा है. For 2 भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, like when I'm looking at this font and looking at this, I'm gonna make it a boxy thing. And we'll obviously need a smaller 2 line का, which I keep generally 20 line इसके नीचे थोड़ी इसकी opacity कम रहती है हमेशा. And then you have your hero section and all that, right. So यहाँ पे what I would have is when I'm designing, cause मेरा image based product, right, my product needs to be visually appealing, मेरे को उनको दिखा अक्षय मैं सोच रहा था कि अभी तक आप आए क्यों नहीं हो प्लगइन का बोलने. So what I want to show is कि मेरे को images दिखानी, right. So wireframing में मैं I also know कि text based तो नहीं चलेगा. So I need to divide this into half and half. तो जो half screen है इसमें text आएगा मेरा ऐसे, and half screen में I'll keep images. Because I know my product ना, मुझे पता है कि मेरे को product में images दिखानी, क्योंकि उससे ही landing page से लोग attract होंगे, right. So I have to show this image of वो mockup ready image का, एक यहाँ पे GIF जाएगा, right. So that would go here. I'm going to just write down GIF. Yeah, तो एक बार GIF में अपलोड होगा ताकि इससे लोग attract होके they clicked and product try करें, right. So यहाँ पे हो जाएगा. Then we'll make a second section जिसके अंदर I can add more features कि भाई use this for this, but जरूरत नहीं है. Landing page में I don't have to sell this product itself sells, right. But all I can do is I can add a process like a video here center में कि ये कर सकते हो step 1 step 2 step 3, ये सब अलग अलग चीज़ें you can do अलग अलग, right. So what I would do is images थोड़ा मैं बड़ी करके यहाँ पे again I need a second CTA here which is gonna be generate, like start generating or something like that. तो यहाँ पर रख देंगे, we'll do that. And then if I have this here, like, so this UI can also be here only, like start generate करो and then I can have a center modal based UI कि बस मैंने जैसे क्लिक किया उसके बाद डायरेक्ट इसके ऊपर ही एक ओवरले आ गया और वो मुझे इमेजेस अपलोड करने को बोल दे रहा है. लाइक सो लेट मी रिमूव दिस 900 ओनली, या, और इसके ऊपर ही मैंने एक डार्क ओवरले डाल दिया और ब्लैक कलर का. एंड अनदर मोडाल ओपन्स जो बोलता है कि अपलोड इमेजेस. सो दिस थिंग, बट इंस्टेड ऑफ सिंगल इमेज दिस बिकम्स अ मोडाल काइंड ऑफ थिंग अलग से, राइट. सो द सेम सेक्शन यहाँ से उठाया मैंने, इनको शिफ्ट ऑटो लेआउट किया, कॉपी पेस्ट मारा, यहाँ ले गया लैंडिंग पेज पे एंड पेस्ट मार दिया सेंटर में, राइट. सो यू डोंट नीड टू लॉग इन एंड कुछ नहीं करना तुम्हें, आराम से हो जाएगा. और इवन इफ यू वांट टू लॉग इन, जब इस पर क्लिक करें यू गेट देम टू लॉग इन, ऊपर अकाउंट लॉग इन हो जाता है एंड देन दिस प्रोसेस स्टार्ट, राइट. और इसको आई कैन मेक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि भाई स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, अलग अलग, राइट. या समथिंग लाइक थोड़ा सा और I'll go I'll turn this to this. हाँ, सो एक मॉडल ओपन हुआ, मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट ऐड किया, जनरेट मॉकअप किया, नेक्स्ट स्टेप पे गया जिसमें मुझे फिर ये इमेजेस दिख जाएंगी, सिंपल 2 स्टेप वो भी, राइट. अब ये दोनों वैलिड UI है, राइट. ये लैंडिंग पेज से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बिफोर सेंडिंग देम एनीवेयर, कि इसी पेज पे हो तुम
और इसी पेज से तुम बस क्लिक कर रहे हो, 2 मिनट लिया, तुम्हारा काम हो गया, राइट। सो मैं तो कहीं और भेज नहीं रहा हूँ या इस पेज से मूव नहीं कर रहा हूँ, सो फ्रिक्शन कम है, विच इज़ एज अ साइड प्रोजेक्ट स्मॉलर, आई वांट देम टू ट्राई आउट द प्रोजेक्ट, राइट। तो वो हो सकता है, बट द थिंग इज इफ आई लाइक डू दिस वर्जन, तो मुझे उन्हें क्लिक करके यहाँ लाना पड़ेगा, और जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ पे ये मॉडल बना रहा हूँ, तब ये एम्प्टी रहेगा, राइट। सो अंटिल दे अपलोड एन इमेज, यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं ना, ये खाली रहेगा पूरा का पूरा, विच वोंट लुक नाइस, राइट। ये इमेज जो होगी ये एकदम थोड़ी कम रहेगी, सो ये गंदा लगेगा अपलोड इमेज, तो वो सेम इसकी तरह लगेगा। सो आई रेदर हैव अगेन, अगर मुझे चूज करना होता है एज ए प्रोडक्ट, जस्ट MVP बना रहा होता मैं, तो आई वुड गो विद दिस बिकॉज दिस इज मच क्लीनर, यू नो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बट पीपल आर ओके विद क्लिकिंग 1-2 स्टेप इफ दे नो कि इतने स्टेप लगने वाले हैं। सो दिस वर्जन ऑफ हैविंग अ मॉडर्न एवरीथिंग इज मच मोर सेक्सियर टू डू। सो मैं यहाँ मुझे एक मेरा लैंडिंग पेज स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने एक स्क्रीन दिखा दी लाइक व्हेन यू हैव मॉडर्न एवरीथिंग, और तुम वहाँ से नेक्स्ट चले जाते हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन मॉडल, फिर सेकंड वेरिएशन मॉडल में यही बन जाएगा। सो लेट मी जस्ट ऑटो लेआउट दिस शिट आल्सो, कट आ रही है, इसकी वजह गाने बजने चाहिए तब मज़ा आता काम करने में, बट राइट। सो आई एम गोना कमांड C, कमांड V ऑन द शिट, या ये सेकंड मॉडल बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई नीड टू ऐड अ टाइटल, इस मॉडल के अंदर टाइटल होना चाहिए ऊपर, विच चेंजेस स्टेप 1 to स्टेप 2 दिखना चाहिए ताकि उनको आइडिया आए एंड ऑल दैट, राइट। सो वायरफ्रेम में यू नो आइडिया, बट ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, मॉडल बेस पे हो जाएगा, बढ़िया सेक्सी लग जाएगा, राइट। सो दिस इज द बेस। अब मेरे को क्लियरिटी आ गई है कि वायरफ्रेम का मेरे को प्रोडक्ट क्या बनाना है। नाउ द थिंग वुड बी, वायरफ्रेम बनने के बाद आई हैव टू जंप एंड गेट लाइक आई हैव टू गो एंड फाइंड आउट गुड UI एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, और डिज़ाइन क्या करनी है, क्या कलर में जाना है, क्या इमेजेस यूज़ करनी है, उस सब पे थोड़ा बहुत प्ले अराउंड करना पड़ेगा। इट्स फॉन्ट एंड ब्रांडिंग कम्स इनटू दिस पार्ट। सो लेट मी चेक UI में कुछ मिस तो नहीं कर गया मैं। सो वी हैव इनपुट बॉक्स, लेट मी यू नो व्हाट, सो वी हैव द लैंडिंग पेज, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट जनरेटिंग, यहाँ करो वहाँ करो, ओपन। विल नीड वन मोर प्रॉम्प्ट विच वुड बी साइंड विद गूगल, जो हमें यहीं से मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फाइल में यूल गेट। सो ये तो एक तो फिग्मा का बहुत बेनिफिट है यार, यू डोंट हैव टू लाइक खुद नहीं बनाना पड़ता, पूरी चीज़ें सब यहाँ मिल जाती हैं यार। कहाँ गया, यप, यू आई फाइंड दैट वेरी आराम से। बट नहीं, यू नो व्हाट, इसके पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा, आई हैव टू मेक अ मॉडल विच वुड बी, सो आई वांट माई फर्स्ट टाइम यूजर्स जो पहली बार आ रहे हैं, राइट, आई डोंट वांट देम टू लाइक, आई डोंट वांट देम टू लॉग इन, क्योंकि अगर वो चखेंगे नहीं ना इस चीज़ को, दे वोंट नो कि कैसा बन रहा है, राइट। सो अगेन, हाँ चलो इसको एक बात कर लेते हैं, दिस वुड बी वेरी फन दिस पॉइंट। अभी अगर मैं इसको देखूँ ना स्टेप बाय स्टेप यूएक्स फ्लो के वाइज में, सो आई हैव लैंडिंग पेज, ठीक है, मैं जूम इन थोड़ा सा, लैंडिंग पेज से एक सिंगल क्लिक किया आपने एंड यू रीच टू you go to the, इसके ब्राइटनेस कम कर दूँ मैं, यस, नाउ वी कैन, golden landing page से you do this, you go to the first modal which is upload logo, right, and obviously I have to add the stuff है, कैसे educate करना है उनको, लोगो क्या होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए and all that, वो typical cleaning stuff आ जाता है इसके अंदर कि अगर मान लो अपलोड लोगों की साइज ज़्यादा बड़ी है तो हैव टू डिज़ाइन एन एरर स्क्रीन ऑल दैट, बट अभी हम उस पर नहीं घुसते हैं। सी दैट इज़ द वेरी परफेक्शन वाला स्टफ, स्टार्टिंग से स्टार्ट में डोंट ओवर थिंक, उस लेवल जाओगे तो कन्फ्यूज जाओगे फालतू में। अपलोड लोगो, देन यू जस्ट जंप इन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डाउनलोड इमेजेस, ठीक है। अरे क्या हो गया, अच्छा गलती से स्क्रीन शॉट आ जाता है, डाउनलोड इमेजेस, ठीक है। अब ये 3 स्टेप हो रहे हैं मेरे पूरे प्रोडक्ट के फ्लो में। आप यहाँ पे आ रहे हो, अपना लोगो अपलोड कर रहे हो, आई मीन लैंडिंग पेज से आप क्लिक कर रहे हो ऑन CTA, अपलोड कर रहे हो इमेज, आपकी इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो, सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। अपलोड लोगो में आपको प्रॉम्प्ट्स पूछा जा रहा है, प्रीटी बेसिक स्टफ, राइट। बट यहाँ पे पता मुझे अब एक चीज़ करनी है, दिस हैज़ बिन डिज़ाइन वाला थिंग, नाउ लेट्स बिकम साइड प्रोजेक्ट और बिल्डर, राइट। ये करने अगर दूंगा मैं तो लोगों को फ्री में तो करने दूंगा नहीं, राइट, क्योंकि पैसा हमें भी खर्चा करना पड़ेगा, राइट। सो वी वांट टू मेक मनी, और इवन इफ यू डोंट वांट टू मेक मनी, वी वांट टू एटलीस्ट हैव सम यूजर डेटा, कुछ तो जमा करूँ ना उनसे, मैं कुछ तो लूँ। तो मैं क्या ले सकता हूँ उनसे, अभी ऑब्वियसली उनका लॉगिन ले लूँगा मैं। लॉगिन का बेनिफिट ये होगा कि उसके बेस पे आई कैन अगेन रीसेल देम, और अगर मैं लॉगिन ले लिया है तो आई कैन मेक अ डैशबोर्ड प्रोफाइल UI जहाँ पे आई कैन शो देम द ओल्डर इमेजेस एंड एवरीथिंग,
एज सेट फर्स्ट वर्जन में आई वो MVP में इतना मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा कि मैं उसके UI बनाने बैठूँ, डैशबोर्ड क्रिएट करूँ, फाइंडर होल्डर रिविजन ऑल दैट. अभी के लिए दिस इज़ द बेस एलिमेंट, बिकॉज मुझे लॉन्च करना है 2-3 में, राइट. 2 दिन में मुझे लॉन्च करके निकालना है. तो आज मैं इसको डिज़ाइन करूँगा, कल मेरा बंदा डेवलप करेगा इसको, थर्ड डे पे विल डू अ लॉन्च, और उसके बाद विल कीप डूइंग वर्जन 2 वर्जन 3 अपडेट करते रहेंगे. बट बेसिक पहले निकाल लेना चाहिए, राइट. सो डोंट ओवर थिंक अ प्रोडक्ट स्टार्टिंग में. नाउ द डेटा एलिमेंट, राइट, विच इज़ गूगल लॉगिन, मैं कहाँ ऐड करूँ इसको? लाइक ये बताओ मेरे को ना, दिस वुड बी फन. टेल मी, वेयर शुड आई ऐड द गूगल लॉगिन? So obviously I have two way location where I can add it, right? Either it goes here before uploading the logo, or either it goes after downloading the images, or when I download the images, right? यहाँ पे जाना चाहिए. So which one? Again, अब तुम लोग देख रहे हो starting से stream, you already know the product क्या है, right? तो तुम लोग को क्या लगता है which one is the better method कि मैं इसके थ्रू करूँ तो बढ़िया रहेगा, और मेरा यूजर जो है वो छोड़ेगा नहीं इस प्रोसेस को. When he or she is more इंसेंटिवाइज और मोर इन्वेस्टेड इन दिस होल प्रोसेस, कि वो इस प्रोसेस को कम्प्लीट करके ही निकले, उससे पहले निकले ही नहीं. वेयर शुड आई ऐड दैट? सोचो, शुड आई ऐड इट बिफोर लैंडिंग पेज और डाउनलोड इमेजेस? आई नीड द आंसर्स इन कमेंट्स. हाँ, बाय द वे मैं देख रहा हूँ 6 लोग देख रहे हैं, पर तुम लोग भी आलसी बचोगे नहीं. कमेंट ऐड, लाइक वेयर शुड आई ऐड? Sunny sir, we'll answer the question, like people, let people think. You know how to type ना, क्यों भूल गए? Let's wait for few. After will work between upload and download. Nice. Guys, you are right, but not between upload and download. I want to show them the options, right? So when they click download images, उसके बाद ऐड करूँगा मैं. And as I said, Anurag said after will work. Mayank sir said let them taste it first, right? Taste it first. So they both, like you all three are right. And क्योंकि इसका, हाँ, सो यहाँ पे उन लोगों ने लोग अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी एफर्ट ले लिया है. सो नाउ दे आर मोर लाइकली टू स्टे एंड लॉग इन, क्योंकि उनको रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं सर 3 to 5 राउंड्स का थोड़ा, आई थिंक दैट अगेन इज वर्जन 2 थिंग, बट आई वांट टू चार्ज देम फ्रॉम क्रेडिट बेस पे करना चाहूँ तब का आएगा, राइट. बट अभी के लिए आई जस्ट टू फिगर आउट दिस वाला पार्ट. सो अभी के लिए यहाँ पे जब डाउन इमेज दूंगा ना मैं, सो आई विल शो देम अ प्रीव्यू. यहाँ पे आई विल शो देम द प्रीव्यू विच दे कैन राइट क्लिक एंड सेव एज इमेज. कर सकते हैं, उनका मन है कर लो, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं रिजल्ट दिखा चुका हूँ, राइट. बट यहाँ बहुत गंदी क्वालिटी रखूँगा, और उसके बाद आई, जब वो डाउनलोड करेंगे इमेजेस, क्लिक करेंगे इस चीज़ पे डाउनलोड करने के लिए, तब आई ऐड द गूगल लॉगिन. बिकॉज डाउनलोड करने के लिए उनको लॉगिन यूज़ करना पड़ेगा, तो डेटा मिल जाएगा मुझे. अच्छी सर इज लाइक पहले डाल दो. सर यू वैलिड पॉइंट, बट वो फ्रिक्शन ऐड करेगा. आई डोंट वांट, लाइक आई वांट टू टेस्ट देम कि उनका प्रोडक्ट कैसा लगेगा, बिकॉज वंस दे सी देयर ओन प्रोडक्ट कैसा लग रहा है ना, ये अलग ही फील आ जाती है. बस ना, यू नो कि मेरे को चाहिए, अब तो यार दिख गया मेरे को सामने, आई वांट दिस, हाउ डू आई गेट दिस? तो ऐसे यू जस्ट साइन इन, विच मेक्स इज मच ईजियर फॉर देम टू डू, तब बहुत आसान हो जाता है, राइट. तो चलो अब इसको, नाउ दिस बेसिक वायर फ्रेमिंग फ्लोज वाइज डन हो गया. नाउ माई जॉब इज टू डिज़ाइन इट इन टू अ लो फिडेलिटी, थोड़ा अच्छा, मैं इसको हम अच्छा बना देंगे, राइट. अगेन ब्रांडिंग में भी नहीं घुसेंगे, अगर घुस गए, लाइक जनरली इन साइड प्रोजेक्ट्स आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द ब्रांडिंग साइड ऑफ थिंग्स, कि बस डायरेक्ट फाइनल बनाने में ही बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत ही करो, क्योंकि साइड प्रोजेक्ट है तो उतना स्टेप बाय स्टेप भी चाहिए. बट फॉर यू फोक्स आई थिंक ईजी रहेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, और यू नो व्हाट, फक इट, लेट्स जस्ट गो डायरेक्टली. ठीक है, सो लेट्स जस्ट मेक दैट शिट. साइन फॉर हाई क्वालिटी, यस सर, इट्स अ गुड पॉइंट, बट अगेन दैट मीन्स डेवलपर को 2 चीज़ें रखनी पड़ेंगी. ही और शी नीड टू फिगर आउट कि यार क्वालिटी कहाँ होस्ट करे या ये सब चीज़ें करे, राइट. सो कॉम्प्लिकेट क्यों करना अंटिल वी रीच दैट स्टेज, बिकॉज ऑल्सो सनी सर एक पॉइंट ये भी है कि लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन, हायर क्वालिटी में यू कैन ऑलवेज यूज़ AI टू अपस्केल. लाइक जो बंदा यहाँ पे आके AI यूज़ कर रहा होगा, बंदी यूज़ कर रही होगी, दे नो कि इसको मैं अपस्केल बाद में कर सकता हूँ, राइट. कमेंट पढ़ लो दोस्तों. जस्ट टू लेट यू नो, अक्षय सर इज फ्रॉम दिल्ली. यू ऑलरेडी नो कि हाँ यार,
वो दिल्ली से हैं। अगर नहीं पता था तो अब तुमको पता है, ये देख के यू विल हैव एन आइडिया कि हाँ भाई पक्का दिल्ली से है। also get a sense for them where it will save things for later use. Downloading के लिए बोल रहे हो ना आप? Yeah, it can. I mean, हाँ, that's a good point. See, that's a very good point. कि if I do ask them to log in and then they save, और जब बाद में लौट के आ रहे हैं और उनको चीज़ें नहीं दिखेंगे तो क्या करेंगे? That means I have to make sure कि डेवलपर को पता हो कि जब वापस लॉग इन करें ना, so I have to design one more images which would be previously generated, right? So either I write in sign पे कि download this images, or I say them कि वापस आए करो. That data saving वाले के लिए I have to generate a newer screen. जरूरत नहीं है मेरे को उसके लिए, so I won't do it. But I just design it, right? So अब the main thing comes here, right? So the easiest way we design side projects, और मैं जब starting करता हूँ, is you find inspiration. और इसके लिए you go to Pinterest, ठीक है? And before we jump on, एक बार ये sound सुन लेते हैं यार, बहुत sexy sound है. कहाँ गया sounds की window? बत्तगरारी sound effect की window लगा के listen to this song. बीट बहुत क्रेजी बनाई है पेनी सर ने, ईशान सर ने, सो व्हाई नॉट. मैं स्पेशल ढूंढता हूँ तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा. तो ऑडियो ठीक है ना? मीट केशव सर, ठीक है, ये बहुत ही मजे ले रहे हैं. इनको सब पता है कैसे क्या बनाना है. इनको दिखा के, मतलब यू ऑलवेज से समवन टॉट यू, अगर कुछ गंदा हुआ ना तुम उस पर ब्लेम कर सकते हो. Yeah, so I'm finding some inspiration. कुछ अच्छा लगा, कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं. Like, so while finding inspiration, no, what I do is I look for 3 different things. एक तो obviously visuals, second thing is fonts, and the third thing is layout. सबका अलग-अलग will have the vibe कि कौन सा work कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. Yeah. I was thinking to use bento and feature वाले section में, just cause design Twitter में चल रहा है बहुत ज़्यादा, so can be useful. देखते हैं. This is a good style. I don't know how you utilize it, but है बढ़िया style है ये. But the one thing I'm while looking at these things, I'm looking at is कि image heavy है, like so we'll have better images, like लोग generate भी करेंगे, तो I'm looking for options जिसमें थोड़ा image heavy दिख रही हो, so I can utilize that to highlight. For example, ये this is the good one, hero pack वाला. So I'm also looking at, when I'm looking at reference, I'm seeing कि कहाँ पे images ज़्यादा अच्छे दिख रही हैं, and I can use that also in references, और उसको किल सकते हैं. Godly website, yes, Kisha sir give a very good option. Godly बहुत crazy resource है. थोड़ा क्रेजी इंटरेक्शन होता है, सो इट्स गुड फॉर जब मैं थोड़ा सा हैवी काम करना हूँ. फॉर बेसिक गो विथ वन पेज है, सो इट्स इजियर फॉर मी टू, क्या बोलते हैं, वर्क एंड डू शिट, राइट. आई थिंक
think I'll go back to the one page the only, which I like. I like few variations. I'm gonna see how to use them in my mockup. Ooh, yeah, ये अच्छा है, ये अच्छा स्टाइल है. I remember one product I see यहाँ पे नहीं है, but मेरे को अचानक याद आया एक बहुत ही क्रेजी सा प्रोडक्ट है. क्या नाम था उसका? नाम क्या था यार? को नहीं याद आ गया मेरे को. What I was thinking for, like what I was. Just get all of my references and inspirations here. But अच्छा रहता है, but मैं just go with this cause easy रहता है. अरे यार, I like this because this shows, for example, it's very typical basic. If I want to make a UI screen, use like I'll show logos का option here. 3 अलग-अलग logos का outline दिखा दूँगा and I'll show here the variations. This can be a good section for hero, right? Which is nice. ये थोड़ा image heavy है, which I also like. इसमें थोड़ा हमें design style में heavy जाना पड़ेगा. I don't know if I want to go in this. अब ठीक है, sound is gone. Sorry यार, मेरे को बहुत अच्छी लग गई beat. I'm gonna keep using this beat. Good hero section. This is a good way of showing how which variations like you can use, like styles join. Like, this can be prompts as styles, and if I upload a logo, I can even show you here existing. So landing page में if I want to go into that route also, where I just ask you to upload an image और वहीं नीचे ही update हो जाए and you show all of this variation automatically. So 15 prompts साथ में बन जाए, which is tough. AI में इतना easy नहीं है. यहाँ तो they are just showing automatically. तो this might not be a good way, but ये अच्छा section है how it works वाला. But the notice in this website, they like the font they are using is very hero-ish, like comic वाले vibe पूरे दे रहे हैं, right? So that is nice. Guidelines is nice. We can have them. So we'll keep the guidelines wala function also. And yeah, let's see more things. Carl Beefson. Yeah, this I liked because I said that I like images wala thing. So I was thinking, just have a simple this clean UI. क्योंकि the thing is कि जो images generate होंगे ना, वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा क्रेजी और हैवी थोड़ी सी डिज़ाइन स्टाइल में होंगे. सो आई वांट टू गो विद दिस के ऊपर मस्त एक क्लीन लोगो, साइड में गेट इन टच या स्टार्ट का पॉइंट. यहाँ पे यू हैव लाइक अ सेक्शन मेक योर लोगो इनटू लाइक व्हाटएवर द कॉपी वी कम अप विद, और यहाँ पे बस वो इमेजेस हों सारी. एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस लाइक इन 5 ग्रिड, आई हैव देम लाइक दिस. सो वो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में चल रही हूँ 4. सो व्हेन यू स्क्रॉल, वो ऑटोमेटिक से प्ले होती रही इमेजेस एंड दे आर GIF चेंज होती रही, राइट? सो दे जस्ट कीप चेंजिंग ऐसे ऐसे. दिस वन स्टाइल आई एम थिंकिंग राइट नाउ. क्लीन मिनिमल, ज़्यादा डिज़ाइन स्टाइल नहीं करनी पड़ेगी इसमें. रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट हो सकता है आराम से, तो ईजियर, नो पेन. इसकी ब्रांडिंग एक्सपेंड नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत कम हो जाएगी, तो 2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा, राइट? सो नाइस. इसमें कलर्स थोड़े से अलग हैं. आई वुड गो विद डिफरेंट कलर्स, बट आई लाइक द लेआउट ऑफ वाइट एंड दिस. सो आई यूज़ अ प्राइमरी कलर देन वाइट, बट क्या करेंगे देखेंगे. Then this one, I like this UI. मेरे को ये अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये खोला था. Like the way the cards are holding. But वही है कि मेरे वाले element में I don't see a way of using it. But this can be fun, यार. What if I just go like first single image? What if I go? But I have like इसका नाम जो भी है, वो लोगो बड़े एकदम बड़ी स्क्रीन में, like, and then ऊपर images जो है ना, images इसके ऊपर आ रही हैं. So instead of like the logo is here, then you scroll after 2-3 सेकंड के डिले के बाद, the images start coming like पहले की आ गई, then इसके ऊपर एक images थोड़ी ऐसे आ गई, and हर scroll पे you add more images, और यहाँ पे बस वही लिखा हो generate images, और ऊपर ही. So when you scroll down, scroll, all images stack on it, and then you see a upload image का UI. Like and when you click on it, तो ये मॉडल बन जाए and you go ahead.
आई थिंक यू डोंट इवन नीड दिस जो वायरफ्रेम ने किया था ना, वायरफ्रेम में वी डिड दिस कि यहाँ पे आफ्टर वी क्लिक जनरेट मॉकअप्स बिकॉज वी आर इन दिस लेआउट, तो हमने इसका कर दिया था, बट वी कैन डायरेक्टली ऐड ये लेआउट यहीं पे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली कि लोगो दिखाई दो तुम ऐड प्रॉम्प्ट का सेकंड या थर्ड स्क्रॉल पे, राइट। और यहाँ से जो मैं ऊपर बटन लगाऊंगा उसको भी CTA आई कैन क्लिप विद दिस, सो इट गोज डायरेक्टली देयर. So if I go with this center based layout style, थोड़ा heavy like इस modern style में I can do that. यहाँ पे upload image का डाल दिया and then you click, it scrolls down and you see all the images. Single page will expand जब scroll तभी होगा जब तुम उसमें image upload करोगे. It's a good direction here also. And this one I like because I can try this font and देख सकते हैं उसके अंदर. But yeah, push. I think I liked it because of this outline वाला function. बट अब उतना क्रेजी नहीं लग रहा है, सो आई लेट इट गो. आई लाइक द फॉन्ट, इसमें मेरे को फ़ॉन्ट अच्छे लग गए थे ये वाले. लाइक व्हाट इफ आई यूज एक्सपेंडेड फॉन्ट लाइक इन फेस, बट इमेजेस हैवी नहीं है. सो आई थिंक वी गॉट गुड 2-3 डायरेक्शंस जिसमें आई वांट टू गो. So we have these 2-3 variations. Sorry, huh. So this one, and this one. Left to right, clean, simple stuff. Images heavy, you have scroll and everything, and this third one. ठीक है, I think these are good variations. अब इसको ख़त्म अब stream में नहीं करेंगे, ठीक है. What I'm gonna do is I'm gonna create these behind the scenes. अभी मेरे को खाना खाने जाना है, live भी है मेरी, ठीक है. So इसको behind the scenes करेंगे. बट आई कीप पोस्टेड ऑन ट्विटर, तो वहाँ पे तुमको ये डिज़ाइन स्टाइल दिखता रहेगा. एंड प्रोडक्ट ऑल्सो लॉन्च होने वाला है इस वीक पे, तो इस वीक आई मीन 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो यू विल सी दैट ऑल्सो. एंड आई एम गोना ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है. एंड एनीवन विद द लिंक कैन कॉपी. तो इफ़ एनी ऑफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस, ठीक है, और आके यहाँ पे खेलना चाहते हो, तो मैं तो स्ट्रीम पे रहूँगा ही इसी फाइल पे. यू कैन ऑल्सो कम एंड डू दैट. और तुम इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरिएशन यू कैन ऑल्सो मेक वेरिएशन. बट दिस इज़ आई थिंक गुड. थोड़ा 1 घंटा और होता है हमारे पास. आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब बेसिक कुछ करूँगा ना, आई विल डू इट अर्ली इन द डे, और बैठ के कर लूँगा. खड़े खड़े हाल बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है. देन वी कैन मेक वेरिएशंस और ये बन ज़्यादा क्रेजी सा. बट दिस इज गुड एक्सरसाइज. होप यू ऑल एन्जॉयड. क्लैरिटी आई हो थोड़ी बहुत हाउ आई गो थ्रू साइड प्रोजेक्ट्स. सो ऐसे ही होता है जनरली. ये तो भी मैंने अकेले किया है ना. What happens is, so I made this product called Pattern Biology, ठीक है. और जब हम वो बना रहे थे ना, उसमें हमने क्या किया था कि डेवलपर साथ में ही था हमारे. एंड हम वहीं पे जब काम करे तभी के तभी लाइव देखना चाहिए, वर्क करेगा नहीं करेगा, what interaction do we have and all that. तो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था. like with the design style I already started. Wireframe निकाल ही दी थी. डायरेक्ट just start with the first part, right? And like design, so we started with this, पर मज़ा नहीं आया. Then I found a good inspiration, which was this one. I like the bold, like डब्बा स्टाइल मुझे अच्छा लग गया था, बेंटो वाला थोड़ा सा वैसा. Then I just started with this and पूरा बना दिया था हमने 2 घंटे में. everyone on Discord sitting directly कर लिया हम लोगों ने. So if you have people together, it's much easier, right? Because आधे लोग काम, for example, if Akshit was here, he is a full-fledged product designer, तो सारे component बना के सब करके वो कर देता तुरंत ही, much faster than me doing alone. But yeah, this is a good way of seeing okay, how can you make side projects so fast and like at least test out your ideas. ज़्यादा किसी नहीं जाना. You have to remove few features. I mean, I can see tons like 3-4 variation which I can add इस feature में. But यहाँ के लिए सही है, ठीक है. So चल निकलते हैं और I'm gonna close the stream. जाने से पहले I'll show you my beautiful face और ये music सुन के जाएंगे हम, ठीक है. थोड़ा सा हल्का ड्रॉप आएगा. ड्रॉप पे मैं खत्म कर दूंगा स्ट्रीम. एकदम ड्रॉप पे देखना भैया, लुटाया दो. बाय द वे, बाय फोक्स. मजा आया. आई विल कंप्लीट दिस सम लाइक ऑन 20 सेकंड में कर दूंगा. आई विल वॉक यू थ्रू द नेक्स्ट स्ट्रीम पे. आई विल वॉक यू थ्रू द होल पैटर्न. आई विल स्टार्ट रैपिंग. मिलते हैं बॉयज. बाय.